Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 18 of the course Object Oriented Programming. In the previous lecture, we have seen the example program of inheritance. I have shown you the problem statement और उसके बाद हमने उसकी coding की थी, उस problem को solve किया था. Then we have seen different relationship between classes, that is association, aggregation, and aggregation is the relationship that in which the child object will not be deleted if the parent object is deleted, right? So हमारे पास एक company का object हमने C बनाया था, previous जो lecture में example देखी थी, and employee का object हमने E बनाया था. So company has employee, right? So company object के पास जो C object है उसके पास हमारे पास एक pointer है EMP, उसकी type employee है. That means this pointer points to the memory location जहाँ पर हमारे पास एक employee type का object store है, right? So that relationship is called aggregation relationship. Now if you delete this, we can say the parent object C, it will not delete the employee object E, right? वो object delete नहीं होगा. So if you delete this thing, there is no relationship like this, but it will not delete the employee object E, ठीक है? That exists. So this aggregation is not that much strong relationship as compared to composition, where in the composition is a part whole relationship, right? So if in composition, if the parent object is deleted, then the part or the child object will also be deleted. So if whole is deleted, the part is also deleted. So we have seen the example of the house, and within the house class definition we have declared an array rooms of 2 members whose type is room, that is that contains the object of a room class. And now if we delete this house object, it will also delete the room objects, that is at index 0 and index 1 of that array, right? So aggregation को usually represent किया जाता है in C via a pointer contained by the object of a parent class that points to the object of the other classes, that is drive class maybe, right? And in the composition we use actually the normal variable names, right? We declare a variable room of class room, right? So we can declare a variable R who that is an object of a room class, right? Or we can declare a variable array that contains the actual object of room class, okay? So with this we can represent the composition relationship. However, we can also represent the composition by using a pointer to the object of the other classes, but then the constructor and destructor in the composition class will deal with the creation and deletion of the object that have been created of the object of the other classes, right? So हमने जो example की थी composition की, उसमें हमने एक normal तरीके से use किया था, normal एक variable use किया था, that is rooms, that is an array of class room, right? जो room की हमारे पास class थी, उसकी type की हमने एक array declare की, उसका नाम rooms रख दिया, उसमें 2 private data, 2 उसमें object हमने store कर दिए, right? But you can have a pointer in the composition example. A house object can have a pointer that points to a memory location where you can store a room object. But in order to fulfill the requirement of the composition relationship, what you have to manage is you have to incorporate in the house class constructor and destructor the deletion or the creation and the deletion of the rooms object as well, ठीक है? So अगर हाउस का ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तो वो रूम के ऑब्जेक्ट को भी डिलीट करके जाएगा. So इस चीज़ को हमने खुद से मद्देनजर रखना है. So this is what we have seen in the previous lecture. In today's lecture we will see the default copy constructor. We have been using this default copy constructor several times. So let's explain, let's see what is a default copy constructor. And then we come to the memory management. I'll show you a string class using a new operator that uses a new operator to allocate a string, and then we will see how this class will manage the memory and what is the problem that can be occur, right? Then we will see pointer to object, array of pointers to objects, and then we will come to the very important concept, that is polymorphism. Now default copy constructor. So
There are two ways to initialize object, right? First, with no argument constructor. When you create an object, there are two ways. No argument constructor, that will initialize the object with the default value, and like for example distance class का हमने object d1 बनाया. With this statement we are not passing any value to the constructor. This means that no argument constructor will be called, will be invoked, and it will initialize the feet and inches of d1 object with 0 and 0.0. The other way is the multi-argument constructor. That is, we create an object d2 of class distance and we are passing two values, that is 5 and this is point 5.76, right? So let me make the point over here. So this is point 4 and 5.76. These are the two values we are passing, and here the constructor with two argument will be called and it will initialize feet with 4 and inches with 5.75, right? So an object can be initialized with another object of the same type. For example, like this. हमने d2 object पहले बना लिया. Now we are creating d1 object and we are initializing the private data member of d1 object with d2. ठीक है? So d is that is also the initialization. We are initializing the object d1 while creating it, and we are initializing it with another object of the same class, जिस class से d1 belong कर रहे हैं, right? So d2 belongs to distance class. Now in this case a default copy constructor will be called. A copy constructor is provided. A default copy constructor is a copy constructor that is provided by the compiler, right? So if you won't write any default constructor for your class, and if you write a such statement, so that is understandable statement, then behind the scene actually a default copy constructor will be invoked that will copy the value of this d2 object into d1, right? So one argument constructor, a default copy constructor is a one argument constructor whose argument is an object of same class. जो इसमें argument आप pass कर रहे हैं basically that is an object of the same class. वो उसी class का एक object pass कर रहे हैं. So that is a default constructor. So default constructor in any class is a one argument constructor, and the type of the argument will be the same as the type of the name of the class, right? So if no copy constructor defined in the class, then compiler adds a default copy constructor. So when default copy constructor is invoked, किस point पे default copy constructor invoke होता है? When object is passed as an argument to a function. For example, we created three objects d1, d2 and d3 of a distance class. Then we initialize it with some value, for example, and then we call a function addDest, passing it two objects d1 and d2. Now these two objects will be passed to the function addDest, right, by value. This means that d1 की जो value है, that is the value of the feet in inches, that will be copied into the first parameter of addDest function, and d2 की value will be copied to the second parameter of addDest function. So addDest function में क्या लिखा हुआ था हमने? अगर addDest की function की definition में आए तो first parameter होगा distance dest1 comma distance dest2. That is the definition of addDest class. For example, क्या definition होगी इसकी? prototype क्या होगी? add underscore dest bracket distance dest1 comma distance dest2. So first parameter है dest1, second is dest2, and we are passing from here is d1 and d2. This means that the function is invoked. Now it will first create dest1 object and dest2 object and copy the value d1 from d1 and d2 respectively. So वो statement उसी तरह से बन जाती है आपके पास, like internally distance space dest1 is equal to d1. Internally ये statement इस तरह से बन जाती है, ठीक है? So copy of d1 values of d1 will be copied into dest1, and values of d2 will be copied into dest2. So the statement will become like जो function call होगी इसमें वो internally statement इस तरह से बन जाती है. I hope you agree. So this is a distance. Let me write it. Distance dest1 is equals to
d1, right, where dest1 is the name of the first parameter of add dest function, वो फर्स्ट पैरामीटर है. सो इंटरनली स्टेटमेंट इस तरह से बन जाती है जो मैंने आपके सामने लिखी है कि d1 की वैल्यू dest1 में कॉपी होंगी, एट द सेम टाइम dest1 ऑब्जेक्ट इज आल्सो क्रिएटेड. नाउ इन दैट केस द कॉपी डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, राइट. Similarly, d2 की value will be copied to dest2, that is the second parameter of that function, and dest2 is created at that time, and we are initializing it with the value of d2. Then again the default copy constructor will be called. And when an object is returned by value, so prototype of the function is like this: add dest, इसको एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक copy constructor call होगा, and then this function returns a value. So function call किस तरह से होगी? That is a function call. So you are passing the value of d1 to d, that is while you are calling the function, the argument जो है उसकी d1 की value की copy जो है will be copied, values will be copied in d1, sorry d1 object की values कॉपी हो जाएंगी डी ऑब्जेक्ट में, राइट, और डी ऑब्जेक्ट क्रिएट भी होगा उस टाइम पे. सो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू d1, एक्चुअली ये स्टेटमेंट बनती है इंटरनली, right, and then when the function executed it will return you an object of a distance class, and then that object will be assigned to d3. Now here at this point again the copy constructor, default copy constructor will be called, right. So whenever an object of the same type is assigned to the object of the same class, then a default copy constructor of that class will be called if no copy constructor is provided in the definition of a class by the programmer. So इस केस में भी हमारे पास default copy constructor call होगा. So basically ये तमाम statements जो बनती हैं ये इसी type की बनती हैं, चाहे वो आप function call करें और object as a value pass करें to that function, चाहे वो function return करे object आपके पास distance class का, and then we assign that distance object to another object, right. Copy constructor function argument in a little bit more detail. The copy constructor is invoked when an object is passed by value to a function. It creates the copy that function operates on, right. So function के लिए एक local copy बना देता है जिसके ऊपर function operate करता है, function उसे private data member की value access करता है, whatever. Thus if the function void func alpha a called by the statement like func a1, then the value of a1 will be copied into the value of a object and a object will be created. Then the copy constructor would be invoked to create the copy of a1 object for use by func, and the name of that copy is a. Thus copy constructor is not invoked if the argument is passed by reference or by pointer. In these cases no copy is created. So अगर आप pass by reference कर रहे हैं, pass by pointer कर रहे हैं, pass by pointer करेंगे, then you are passing simply the memory address, right. That is 32-bit, and while you passing by reference is just you are creating a reference variable for the same memory location जो कि उस object के लिए create की गई थी. So इन दोनों cases में pass by reference और pass by pointer में copy constructor call नहीं होगा, because it will not create a new copy of that object, while in the function call by value a copy constructor will be invoked. Function return value, जब function return value करेगा तब भी copy constructor call होता है. The copy constructor also creates a temporary object when a value, that is an object, is returned from a function. Suppose there was a function function name is func, and it returned an object of class alpha, and this function was called by the statement a2 is equal to func, where a2 is an object of alpha class. The copy constructor would be invoked to create the copy of the value returned by func, and this value would be assigned to a2. So वो value a2 को assign हो जाएगी. इस केस में फिर दोबारा से copy constructor call होगा. So these are the 3 points where a copy constructor is invoked. The first point is whenever you are going to create a new object of a class A, let's say, and you are initializing that object at the same time with the
with another object of same class, that is class A. The second point where the copy constructor, default copy constructor is invoked is when you are passing the object by value. The third point is when you are returning the object by value from a function. ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स है जिस पे आपका डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड होता है. वी विल सी इन डिटेल द कॉपी कंस्ट्रक्टर विद इन द टॉपिक ऑफ polymorphism when we after virtual functions, right? Now let's come to the memory management. So memory management, what is a memory management? It is an act of managing computer memory. It provides ways to dynamically allocate memory to program at their request and freeing it for reuse with no longer needed, when no longer needed. Right? So कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, जिस प्रोग्राम ने रिक्वेस्ट किया उसको मेमोरी एलोकेट करनी है, एलोकेशन के बाद उसको रिकॉर्ड रखना है कि इस प्रोग्राम को अपने मेमोरी एलोकेट कर दी है, उसके बाद जब प्रोग्राम एग्जिट होगा मेमोरी डी एलोकेट होगी, रिकॉर्ड से एंट्री डिलीट होगी, and the stuff like this. In C++, new and delete operator are used to dynamically allocate and deallocate memory for C++ program, and we have seen in our lecture number I think 7 that how we can use these two operators to dynamically allocate memory for a primitive of a simple data type or for the user defined data type, right? So let's see the string class example that uses a new operator to create to allocate memory for a string, and let's see how the memory is managed in that class. So this is a string class. Here we have one private data member that is a pointer character, a character to a memory, sorry, a pointer to a memory where characters are stored. The second parameter is a constructor, that is a one argument constructor. इसको आप एक string s pass कर रहे हैं. It calculates the size of the string, then length of the string, then length plus 1 ये memory allocate करेगा, उसका address assign कर देगा str को, जो कि इस invoking constructor का private data member है str, and then it copy the string from s to str, right? And then we have a destructor. The destructor first display the message deleting str, and then it deletes str, right? So this bracket is there because it tells that str is a str pointer points to a memory where you have a character, where you have an array, right? So if you want to delete a memory, if you want to delete or free the memory that is allocated for the array, then you have to use this square bracket, ठीक है, ताकि वो पूरी array को delete करे. अगर आप array square bracket use नहीं करेंगे तो first element को delete करेगा. Then display function, we're just going to display the value of str, that's it. Now this is the main. So what is happening in the main? Str s1 is equal to information technology. So we are creating an object s1 and initializing it with the string information technology. Perfectly fine. So it calls the one argument constructor, that is this constructor. So it calculates the s जो एक pointer है, that is the pointer local to the string function, string constructor, and this pointer points to the memory location जहाँ पर आपके पास information technology लिखा हुआ होगा. Then आपने इसका size calculate किया, length calculate किया, इसकी length क्या हो जाएगी, and then you allocate the memory using a new operator. So length plus 1 आपने memory allocate कर दी. This one is for the null character. Then you are going to copy the content of s, that is this string, into str, right? And then the second statement in the main is the cout. You are going to display the content, and so we will display clear s1 is equal to, and then s1 dot display. So it should display here this information technology string. Now that is the program output. ये प्रोग्राम की आउटपुट आपको उस टाइम नजर आएगी जब आपका मेन फंक्शन एग्जिट हो जाएगा, राइट? बिकॉज मेन फंक्शन जब एग्जिट होगा तो उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, सॉरी डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा, एंड व्हेन द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, इट डिस्प्ले द फर्स्ट द मैसेज डिलीटिंग str, and then it will delete the str, right? So here, that's why the message is over here. So actually what is happening, that you have an object s1 that contains the pointer str. It has some value. Now this pointer points to a memory location जहाँ पे आपके पास string है information technology, right? And so this deleting str appears when you exit from the main. जब main से आप exit होंगे तो उस time पर object s1 destroy होगा. When the object s1 is destroyed, the destructor of the string class will be called, right?
Okay, let's check out the problem with the string class. So if you copy one string object to another, say with the statement like s2 is equal to s1, so आप s1 की private data member content s2 में copy करें, then this means that both object now points to the same string in the memory. This is like this. S1 object में str की कुछ value होगी. When you write the statement s2 is equal to s1, then s1 का जो ये जो private data member की value है, that will be copied into the str of s2. जब ये कॉपी हो जाएगा, this means that now this pointer also points to information technology string. ठीक है, so अब we have two string objects that contains the character pointer, and these two character pointer points to the same string. That is not the problem, but the problem comes over here. If you delete one string, the destructor will delete the character static string, leaving the other object with an invalid pointer. Like s1 एक ऑब्जेक्ट है, s2 एक ऑब्जेक्ट है. अब आपने डिलीट कर दिया s1 को for example you have deleted s1, then this also delete str as well. This means that वो जो memory allocate की थी यहाँ पर information technology की, this will be no longer available to object s2. Right, now let's go to the program. थोड़ी सी break दें जी. Okay, now let's go to the program and execute that program with different options. s1 डॉट डिस्प्ले उसको डिस्प्ले स्ट्रिंग की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा. ठीक है, लेट्स कंपाइल इट. ओके, एंड एग्जीक्यूट इट. ओके, change the screen size first. You can see display the message s1 is equal to information technology. Why? Because in the output we are writing like s1 is equal to then s1 dot display, and it will display str. और str में क्या है? information technology. str में एक address है, that address is pointing to a memory where you have a string store, that is information technology. Right, जी? So in order to check when the destructor is called, let's see now it will call the destructor because we define the scope that this object will be of this scope. इसका scope ये limited है. right, कैसे define करते हैं? just आप ये brackets डाल दें, दो brackets, opening and closing. right, compile and execute it. Okay, now it displays the message s1 is equal to information technology and deleting str. So this is deleting str message, and then it deletes the str string as well. Okay, now let's create another object of a string class s2. s2 एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है, एंड नाउ व्हाट वी डू इज हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं. नाउ s2 और इसको हम क्रिएट करते हैं s2 and s2 is equal to s1. That's it. कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैसेज लिखती है ताकि पता चल जाए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है. राइट, सो अब हमने s2 ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका हमने स्कोप डिफाइन कर दिया. s2 पॉइंट कर रहा है s1 को.
ठीक है। सो सेम एड्रेस आ गया एंड देन जब इस पॉइंट से बाहर आएगा तो वो डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा किसके लिए, S2 के लिए, S1 के लिए कॉल नहीं होगा। वाई, बिकॉज S1 ऑलरेडी आपने बाहर ही डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब आप मेन से एग्जिट होंगे इस पॉइंट से तब S2 के लिए मेमोरी डीएलोकेट होगी, राइट। लेट्स कंपाइल इट एंड रन इट अगेन। नाउ इसने क्या डिस्प्ले कर दिया, इसने कुछ एक्चुअल स्ट्रिंग डिस्प्ले नहीं की। जो एक्चुअल स्ट्रिंग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो स्ट्रिंग डिस्प्ले नहीं की। वो सबसे पहले जो डिस्प्ले हुई है यार, आई एम सॉरी, सेव इसको कर लेते हैं। Now in the main function, the object S2 is defined within this block. So this means that इसका scope जो है लाइफ टाइम जो है वो इस ब्लॉक तक ही लिमिटेड है, राइट। एंड देन वी डिलीट S2 ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि वो S2 ऑब्जेक्ट को जब डिलीट करेंगे, डिलीट किस तरह से होगा, जब ये इस ब्लॉक से बाहर आएगा यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, हम डिलीट नहीं कर रहे। तो जब ये ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तो the pointer contained by the object, that pointer points to some memory location. The destructor in that class will also delete that memory, ठीक है। उस मेमोरी को भी डिलीट कर रहा है यहाँ पर, राइट। इस पॉइंट पे str को भी डिलीट कर रहा है। So when this happens, then this means that S1 जो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है वो जिस मेमोरी को पॉइंट करता है वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, that will no more be there. वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। सो व्हेन वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ S1 यूजिंग अ डिस्प्ले फंक्शन, इट डिस्प्ले अस सम डिफरेंट वैल्यूज that is not actually known to us, right? So some kind of garbage value we can say, ठीक है। So that is the problem, and to find the solution of that problem, we will see the solution of that problem after the virtual function. आफ्टर द वर्चुअल फंक्शन, यस, ठीक है। सो इसके बाद हम इसका प्रॉब्लम देखेंगे कि हम डिस्ट्रक्टर कैसा एक ऐसा डिस्ट्रक्टर बनाएं जो कि काउंट रखे कि अभी उस मेमोरी लोकेशन को स्ट्रिंग के कितने ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहे हैं। सो इफ द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दिस मीन्स दैट अभी भी स्ट्रिंग का एक ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं जो कि पॉइंट कर रहे हैं उस स्ट्रिंग को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रिंग को। सो इट विल नॉट डिलीट दैट स्ट्रिंग देन, अदरवाइज इट विल डिलीट। Now let's see what is a pointer to object. We have seen this concept, pointer to object and pointer to an array of object when we are in the dynamic memory allocation in some of the previous lecture. So a pointer can point to object as well as to simple data type and array, right? That is what we already know. For example, we have a distance class and we create an object dest1, let's say, of a distance class, and then we call a function getDest. So getDest function call किया, यूजर से getDest वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, so उसने 5 और 6.5 वैल्यू इनपुट ले ली और वहाँ पे फीट और इंचेस में स्टोर कर दी हैं। Then we call a showDest function. It will show the value 5 and 6.5, and then we create a pointer destPTR. destPTR is a pointer, so it contains 4 bytes in memory. Now this pointer points to a memory where you have an object of a distance class. Then next statement is destPTR is equal to new distance. So distance class एक और ऑब्जेक्ट बना, and like this pointer now points to that object in memory, ठीक है। And then you call a function destPTR, then array operator getDest, right? getDest is a function of a class distance, ठीक है। distance class का फंक्शन है। अब इस फंक्शन को आपने कॉल किया destPTR arrow getDest, right? So destPTR arrow means that you come over here and then you're calling a distance function, getDest function with that object, with this nameless object.
सो अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और वो उसके फीट और इंचेस की वैल्यू को सेट कर देगा फ्रॉम द वैल्यूज डिफाइंड बाय द यूजर, दैट इज 8 and 8.6 इन दिस केस. एंड देन वी हैव अ फंक्शन शो डेस्ट. अब ये किसके डिस्टेंस को शो करेगा, क्या डेस्ट 1 के या ये जो डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बनाया है इसके? जी बिल्कुल, डेस्ट पीटीआर जिस पॉइंटर जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के बेसिकली ये वैल्यूज को शो कर देगा, प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर. ठीक है. An array of pointers to object. So consider this example. We have we declare an array D which can contains 3 element of distance type. ठीक है. Now this is an array of pointers. So इसमें हर element जो है एक memory location पर point करेगा and उस memory location पर जो object हमारे पास store है that is of distance class. And each element contains 4 byte in memory. ठीक है, 4 byte लेंगे because address जो हमारे पास 32 bit का है आजकल के system. So 4 byte will be occupied. The next statement is D of 0 is equal to new distance. So object will be created because we have a statement new distance. So the object of a distance class is created, and then the address of that will be stored in 0th index of D array. Similarly, D2 के लिए भी एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और द एड्रेस विल बी स्टोर इन द इंडेक्स 1 एंड D3 के लिए भी इस तरह से नया ऑब्जेक्ट बनेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका एड्रेस थर्ड स्टेटमेंट में भी एक नया ऑब्जेक्ट बने, फोर्थ स्टेटमेंट में एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, दैट इज स्टेटमेंट डिस्टेंस क्लास से एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका एड्रेस दैट विल बी कॉपीड इन D2, असाइन टू D2. ठीक है. नाउ न्यू जो ऑपरेटर है ये रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा, इट रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस. सो देयर इज नो नीड टू परफॉर्म दैट कन्वर्जन देन. ठीक है, और ना ही इसमें डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. देन वी हैव a function, we can use a function set dest. So with so here we have a pointer, यहाँ पर भी पॉइंटर है हमारे पास, यहाँ पर भी पॉइंटर है और यहाँ पर भी पॉइंटर है. Now this pointer points to some other memory location as well. यहाँ पर let's say हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस क्लास का. Now using set dest function, D of 0, D square brackets के अंदर 0 है, so this means that we are referring to the address that is stored on the 0th index of a D array, and with the arrow operator we reached at that address, and at that address we have an object of a distance class. So this represents the object of a distance class, and with that object we call a function set dest. ठीक है. तो सेट डेस्ट का फंक्शन कॉल किया और उसके फर्स्ट पैरामीटर को असाइन कर देगा 7 और सेकंड को असाइन कर देगा 6.5 लाइक दिस. ठीक है. एंड देन वी कॉल अ फंक्शन अगेन शो डेस्ट. सो दैट इज नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिस्टेंस क्लास और वो शो डेस्ट फंक्शन कॉल करेगा इसके साथ. शो डेस्ट करेगा 7 और 6.5 डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पर. Similarly, you can change the value of the object pointed by the pointer that is present at the 1th index and the 2nd index of this array. Right? Okay. Now let's come to the very important topic of the object-oriented programming, and that is actually called a polymorphism. Right? First, we will see from the real world that what is the polymorphism, what is its concept and its effect, and then we will see how we can achieve the same thing in C++. Right? So polymorphism, it enables to write program that process object of classes as if they are all object of hierarchical base class. So एक आपके पास base class है, then you have lot of classes derived from that single base class, and polymorphism basically enables you to write the program that process object of classes that belongs to the derived class, and why it treats because they seems like the object of a base class. So यहाँ पर मैं drive D1 class का object बना दूँ, D1, D2 and D3. Now these are the object of D1, capital D2 and capital D3, but they are also object of a base class because base class. Okay, and then let's see the example number 1 of the polymorphism. So the program let's consider that we are writing a program that simulates the movement of the several types of the animal for a biological study. So it takes the classes fish, frog and bird. So fish, frog and birds, in तीनों animals की जो movement है that is totally different. Fish is basically swims, frog takes some jumps, and bird is basically flying, right? And each of these classes inherits from the base class animal.
सो एक तमाम एनिमल्स की कुछ खसूसियात होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो हर एनिमल में कॉमन है. दैट शुड बी इन द एनिमल क्लास. The specific things, for example, for the fish, the specific things come in the fish class. For frog, it comes in the frog class, and for bird, it comes in the bird class. Definition of the bird class. So contains a function move and maintain an animal location number. Each drive class implements function move. Move एक हर क्लास में एक इसका member function है, and using that member function basically it calls the function and then it will move, right, from the current location to 3 or 4 5 feet away, right. So the program maintains, the program means the main basically जहाँ से आप इस class को use करेंगे, maintains an array of pointer to object of the various drive classes. So हर जो class है, हर जो drive class है, for example fish की class है हमारे पास, frog है, bird है, ये तीनों drive classes हैं, and the base class is the animal class, and we have a move function that is present in all these classes, right. Now the program maintains an array of pointers to object of various drive classes. So हमारे पास animal example है, animal हमारे पास हैं fish, frog, bird, and let's say mammals. These are all derived from the animal class, and if अगर आप सबकी movement को जज करें कि how the animal moves, fish they basically swim to move forward, and frog they basically jump, and bird they basically fly. So polymorphism का जो idea है, that is कि you can call the function, right. So for example a bird, एनिमल जो है, एनिमल तमाम एनिमल मूव कर सकते हैं, बट हर एनिमल अपने तरीके से मूव करता है. वी कैन से लाइक दिस, दैट इज एक्चुअली पोलीमॉर्फिज्म, राइट. सो मैनी फॉर्म्स, राइट. पोली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स और शेप्स, राइट. सो ईच एनिमल मूव, बट हर एनिमल की मूवमेंट डिफरेंट है. अगर फिश मूव करेगी, फंक्शन वो वही कॉल कर रही है एनिमल क्लास का, राइट. सेम फंक्शन मूव कॉल होगा, बट जब फिश क्लास का ऑब्जेक्ट उसे जब कॉल करेगा तो वो स्विम करेगा. जब फ्रॉग क्लास का ऑब्जेक्ट उसे कॉल करेगा तो इट जंप्स. जब बर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मूव फंक्शन को कॉल करेगा, सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट, उस फंक्शन को कॉल करेगा तो वो फ्लाई करेगा. जब मैमल्स क्लास का ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को, मूव फंक्शन को कॉल करेगा तो वो जमीन पर चलेगा, राइट. So we can see that the object of our drive class, they call the same function, but they behave differently according to their own type. वो अपने टाइप के हिसाब से उसके साथ बिहेव कर रहे हैं. So अगर इसका प्रोग्राम की फॉर्म में देखें तो in a program we maintain an array of pointer to object of various drive classes. So हमारे पास एक array है, array of pointers है, और उस अरे से आप पॉइंट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट फिश क्लास का, एक ऑब्जेक्ट फ्रॉग क्लास का, एक ऑब्जेक्ट बर्ड क्लास का, फॉर एग्जांपल, राइट. एंड टू सिमुलेट द एनिमल्स मूवमेंट, द प्रोग्राम सेंड्स ईच बर्ड द सेम मैसेज मूव, जो कि मैं भी बता रहा था कि अगर आपने इस चीज़ को सिमुलेट करना है हर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को, यू सेंड अ सेम मैसेज टू एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज मूव. ठीक है. मैसेज बेसिकली कैसे भेजते हैं ऑब्जेक्ट को? बाय कॉलिंग द फंक्शन ऑफ दैट क्लास. सो आपने मूव का फंक्शन कॉल किया या मूव का मैसेज जब भेजेंगे, सेम मैसेज भेजेंगे डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, तो वो अपने तरीके से उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे. फिश विल स्विम, फ्रॉग विल जंप, एंड बर्ड विल फ्लाई, राइट. So each object knows how to modify its location appropriately for its specific type of movement. कि अभी वो करंट लोकेशन पे कहाँ पर है और नेक्स्ट लोकेशन पे वो मूव करके किधर जाएगा. 2 फीट मूव करेगा, 3 फीट मूव करेगा, फॉर एग्जाम्पल. So relying on each object to know how to do the right thing in response to the same function call is the key concept of polymorphism. So हर ऑब्जेक्ट के साथ आप मूव का फंक्शन कॉल कर रहे हैं. नाउ दैट ऑब्जेक्ट एक्चुअली नोज दैट हाउ टू डू द राइट थिंग और हाउ टू एग्जीक्यूट दैट मूव फंक्शन राइटली. फॉर एग्जांपल फिश के ऑब्जेक्ट के साथ जब आप मूव का फंक्शन कॉल करेंगे
तो देन फिश का ऑब्जेक्ट स्विम करेगा, राइट और जब आप यही फंक्शन कॉल करेंगे फ्रॉग के साथ, देन ऑब्जेक्ट के साथ, देन इट विल जंप, राइट एंड दैट इन रिस्पॉन्स टू द सेम फंक्शन कॉल. सो सेम फंक्शन कॉल हो रही है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ और वो अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रही है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, राइट. सो दीज क्लासेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम द एनिमल क्लास, और इन तमाम क्लासेस में एक फंक्शन है मूव का फंक्शन है, राइट एंड देन वी क्रिएट एन array of objects, array of pointers that points to the object of derived classes. ठीक है, सो अरे हमारे पास एनिमल टाइप की है. नो एनिमल टाइप की अरे है, तो उस अरे में एड्रेसेस हो सकते हैं. कोई एड्रेस होगा फिश की क्लास के ऑब्जेक्ट का, कोई एड्रेस होगा फ्रॉग की क्लास के ऑब्जेक्ट का, कोई एड्रेस होगा हमारे पास बर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का, राइट. सो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट पॉइंटर्स हो सकते हैं. 3 नहीं, आपके पास 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, whatever is the number, right. Now using that pointer when you execute a function, array हमने क्यों ली, because आपने loop में रख के इसको execute करना है. I will show you in the next slide, in the next example, example number 2. So array में इसलिए लिया कि because हमने इसको loop में रख के execute करना है. So zeroth index वाला के साथ जब move का function call करेंगे तो zeroth index for example fish का object है को point कर रहा था, तो move का जब function call होगा तो it will swim, right. एंड देन फ्रॉग का ऑब्जेक्ट जब कॉल होगा तो देन इट विल जंप, राइट. सो सेम फंक्शन कॉल हो रहा है एंड इट परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन टाइप, एंड एक्चुअली द ऑब्जेक्ट नो व्हाट टू डू, व्हाट इज द एक्चुअली द राइट थिंग व्हेन द मूव फंक्शन इज कॉल्ड, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म. Let's see the example number 2, and I hope with that example it will be more clear to you the concept of polymorphism. Suppose we have an object of different classes, all are inherited from the base class, and you want to put them all in an array, right. So and perform a particular operation on them using the same function call. So that is what you want to do. So you have a shape class. हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि हमने ये टास्क परफॉर्म करना है. क्या टास्क हमारे पास है, ऑब्जेक्ट्स हैं ड्राइव क्लासेस के, एंड दे आर ऑल इनहेरिटेड फ्रॉम द सेम बेस क्लास, ठीक है, एंड वी वांट टू पुट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास इन अ सेम अरे, एंड देन वी विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑन देम यूजिंग द सेम फंक्शन कॉल. ठीक है, सेम फंक्शन कॉल के साथ हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं और हर ऑब्जेक्ट अपने तौर पे बिहेव करेगा, राइट. सो वी हैव अ शेप and a circle and square and triangle class, and circle, square and triangle are derived from the shape class, right. shape में एक function हो सकता है क्लास में draw का function, right. shape क्लास में एक draw का function हो सकता है. now when the circle object के साथ आप draw का function call करेंगे तो आपके पास circle draw हो जाएगा. जब square object के साथ draw का function call होगा, same function call है but object square का है, तो उस टाइम पे आपके पास स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा, सर्कल ड्रॉ नहीं होगा, स्क्वायर ड्रॉ होगा, बिकॉज इट नोज दैट किस ऑब्जेक्ट के साथ आप ड्रॉ का फंक्शन कॉल कर रहे हैं. और इसी तरह से ट्राइंगल ऑब्जेक्ट के साथ यू आर अगेन कॉलिंग द ड्रॉ फंक्शन, सेम फंक्शन, बट दिस टाइम इट विल नॉट ड्रॉ सर्कल नीदर स्क्वायर, बट इट विल ड्रॉ अ ट्राइंगल, एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिज्म. लेट्स से वी हैव एन अरे. सो इस एग्जांपल को आप ज़हन में रखें कि वी हैव अ शेप क्लास, that is a base class, and then we have a circle, square and triangle classes. These are derived from the shape class. Now keeping this picture in mind, let's move forward. Now this statement means that we declare an array whose name is ptr array. It contains 4 elements, and the type of the element is shape. ठीक है, not the shape, basically it contains the memory addresses, और वो memory address जिस memory को point कर रहे होंगे वहाँ पर shape type के element, shape type के object store होंगे, right. so when this statement is executed, memory will be allocated for the ptr array. so 0 1 2 3 4 indexes है उसके. so हर index पे हमारे पास memory address होगा, और उस memory address पे we have an object of a shape class. now remember that shape is a base class for triangle, circle and square class. ठीक है, जो drive classes है उसकी एक base class है ये. now the object of a circle class or the object of a triangle class or the object of a drive class, any drive class, they are basically considered as an object of a base class.
So if we write something like this, ptr array 0th index, and then we are creating a circle object. यहाँ पर हम circle का एक object बना रहे हैं using an operator new, और so वो circle object के लिए memory allocate कर देगा, memory will be allocated, and new will return a pointer, an address that will be assigned to the 0th index of that array, ptr array. इसका मतलब है कि 0th index पे हमारे पास एक एड्रेस आ जाएगा, एक ऐसी एप्लीकेशन का जहाँ पर हमारे पास सर्कल टाइप का ऑब्जेक्ट मौजूद है. Now ये किस तरह से पॉसिबल है? बिकॉज सर्कल इज अ ड्राइव क्लास ऑफ द शेप क्लास. सो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट शेप क्लास का भी बनाएं, आप ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं. Then ptr array 1 is equal to new triangle. Now if we create an object of a triangle class, and new operator will create it, and it will return an address, memory address, that will be stored at the 1th index of ptr array, like this. And then this is the next statement. It again creates. Now you can see we have created circle object at the 0th index, and now this should be index number 2. Let me write it, index number 2. So अब index number 2 में भी हम एक सर्कल का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसका एड्रेस स्टोर कर रहे हैं. सर्कल का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसको इंडेक्स नंबर 2 में स्टोर कर दिया. This is index number 3, right? Okay. Now in index 3 we are storing the address of a square shape. So square का ऑब्जेक्ट बना, न्यू ऑपरेटर ने इसको डायनामिक मेमोरी एलोकेट की, and it will return the pointer or address that will be copied in array ptr 3rd index, right? So it will be like this. Now you have a loop, आपके पास loop है, you execute that loop 4 times, and you have a draw function, right? So अब हम draw का function call कर रहे हैं हर object के साथ. Now ptr j is initially 0, so ptr j and arrow operator. ptr j is a memory address, that is the memory address of a circle object. So circle object के साथ जब draw का function call होगा तो it will draw a circle, right? इसी तरह से j की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो 1th index पे we have an address of a triangle object. This means that ptr array और index में इसके जब 1 आएगा, arrow operator, we reach at the triangle object, and then we call a function draw function. It will draw a triangle, because now this time you call a draw function with a triangle. Now value of j will be incremented, and then ptr array. So this is, I'm sorry, this is the same array that we have over here. So this is ptr array. Let's assume this is same. And then when the value of j is 2, at the 2nd index of that array we have a memory address. That memory address contains, और उस memory address पे हमारे पास circle का object पड़ा हुआ है. तो जब draw का function circle object के साथ call होगा, it will draw a circle, right? And similarly, when the value of j become 3, so at the 3rd index of the ptr array we have a memory address, and at that memory address we have an object of a square class. Square class का object के साथ जब draw का function call होगा, it will draw a square, right? So this means that we are executing the same function, but the object is different and the output becomes different. So move का function है, same function आपने frog के object के साथ execute किया, fish के object के साथ execute किया, आपने bird के object के साथ execute किया. Both three behave differently. Fish will swim, frog will jump, and bird will fly. Shape की class की example हमने देखी. We have executed, I've shown you this code as well, and we have executed the same function, that is the draw function, with the object of a drive classes, various object of a drive classes, and हर object के साथ move function differently behave होता रहा, differently उसका behavior different रहा, move draw function का, sorry, shape की class में. Why? Because it will look at the type of the object जिसके साथ आप draw का function call कर रहे हैं, then उसके accordingly वो shape को draw करेगा, right? I hope with that these two example this polymorphism will be clear to you. And poly means
many, and morphism is shape. This means that many forms or many shapes. So this is an amazing capability. So completely different functions are executed by the same function call. Completely functions, हम आगे एग्जांपल में देखेंगे कि वाकई कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे. आप सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यूजर को ये पता चल रहा है कि सेम फंक्शन कॉल हो रहा है और सेम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा हर दफा लूप में, बट ऐसा नहीं है. कंप्लीटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे. और कौन सा फंक्शन डिफरेंट एग्जीक्यूट होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आप करंटली पॉइंट कर रहे हैं. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसके साथ आप ड्रॉ का फंक्शन कॉल कर रहे हैं. अगर वो ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल को ड्रॉ करेगा, अगर वो सर्कल है तो वो सर्कल को ड्रॉ करेगा, अगर वो किसी और टाइप का ऑब्जेक्ट है तो उस टाइप की शेप को ड्रॉ करेगा. सेम फंक्शन कॉल हो रहा है बट एक्चुअली डिफरेंट फंक्शन कॉल्स होंगे और वो उनकी आउटपुट डिफरेंट आएगी. सो इफ द पॉइंटर इन द पीटीआर अरे पॉइंट्स टू अ सर्कल, द फंक्शन दैट ड्रॉज अ सर्कल इज कॉल्ड. इफ इट पॉइंट्स टू अ ट्राइंगल, द ट्राइंगल ड्राइंग function is called. So this is called polymorphisms, which means different forms, right? So आपके पास same function call हो रहा है but उसकी different forms available हैं, right? And that is actually called a polymorphism. There are certain conditions for the polymorphism, and what are those conditions? Following conditions must be met in order to achieve polymorphic behavior. So polymorphic behavior अगर आपने achieve करना है OOP में, object oriented programming में, then there are certain conditions. First, all the different classes of shape such as circle and triangle must be inherited from a single base class. जितनी भी classes इसमें use हो रही हैं, जिस क्लासेस के आप ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं और अरे में रखना चाह रहे हैं उनके एड्रेसेस, एंड देन इन द लूप यू एग्जीक्यूट द सेम फंक्शन, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ड्राइव क्लासेस के ऑब्जेक्ट होंगे और वो तमाम क्लासेस जो हैं वो एक बेस क्लास से ड्राइव की गई होंगी. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट लाइक दिस. सो वी हैव अ शेप क्लास, सर्कल इज inherited from a shape, square is derived from shape, and triangle is derived from shape. And each class contains a function draw. वो base class में भी होगा, वो drive class में भी होगा. So when you execute this statement, now अब draw function कौन सा execute होगा? base class का होगा, circle class का base class का होगा, drive class का होगा. Now if we really implemented the polymorphic effect, then it should call the function draw based upon the type of this object. ये जो object है इसकी type क्या है इसके ऊपर base करके. If that object is of a circle type, this means that point इस array का jth index पे हमारे पास circle object का address पड़ा हुआ है तो वो circle का draw function call करेगा. That is this function जो circle का draw function है, और जब circle का draw function call होगा तो वो circle को draw कर देगा, right? And इसी तरह से अगर इस address के jth index पे ट्राइंगल का फंक्शन, ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, jth इंडेक्स पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे हमारे पास ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो वो ट्राइंगल का ड्रॉ फंक्शन कॉल करेगा और ट्राइंगल का जब ड्रॉ फंक्शन कॉल होगा इट विल ड्रॉ अ ट्राइंगल. सो बज़ाहिर तो आपको ये लग रहा है कि आप सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं बट एक्चुअली डिफरेंट फंक्शंस कॉल हो रहे होंगे. ठीक है, उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होगा. द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज दैट द ड्रॉ फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर to be virtual in the base class. So base class में हमारे पास draw का function virtual होना चाहिए. क्यों virtual होना चाहिए? So that it will not call, this command will not call the draw function of a base class. ठीक है, so that's why we have to make the draw function virtual in the base class. Example programs. So we will see two example programs. First, a normal member function accessed with pointer. हमारे पास नॉर्मल मेंबर फंक्शन होगा, दैट इज जो हमारे पास ये जो फंक्शन है प्रीवियस स्लाइड में आ जाते हैं, ये जो ड्रॉ का फंक्शन है ये वर्चुअल फंक्शन नहीं है बेस क्लास में. बाकी सारा यही हम चीज़ें करेंगे, हम इसी तरह से पॉइंटर से पॉइंट करवाएंगे ऑब्जेक्ट को और वी कॉल द सेम फंक्शन एंड वी विल सी दैट अब बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है, ये ड्राइव क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है. सो अगर वर्चुअल नहीं बनाएंगे हम बेस क्लास में तो उस सूरत में हमारे पास बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा ड्रॉ का. क्यों होगा इसको आगे जाके देखते हैं. और अगर if we make that function a virtual function, then this means that the draw function of that particular object, जिस टाइप का ये पॉइंटर होगा, जिस टाइप का ये पॉइंटर जिस टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा उस टाइप का
क्लास का ड्रॉ फंक्शन कॉल होगा. So we will see the two example program. Normal member function accessed with pointers. कि normal member function को आप pointer के through कैसे access कर सकते हैं, and virtual member function accessed with pointer. कि आपने virtual member function बनाया हुआ है and then you are accessing the that function using a pointer. Then what will happen, right? So let's see the normal member function accessed with pointer. So this is the base class that have a show function. We will see a very simple example, ठीक है, जिसमें just एक show function है and it display the message base. That's it, ठीक है. Then we have a drive class drv1, drive class 1, that is inherited from the base class and the type of inheritance is public, and that class also have a show function. So that is no problem. We can override the function definition in the drive class. So अब जो show function है ये display कर रहा है drv1, right? So that is a drive class 1, and then this is drive class 2, ठीक है, drv2, that is drive class 2, and it is also inherited from the base class. Type of inheritance is public. It also has a function show function जिसने बेस क्लास का फंक्शन ओवरराइड किया हुआ है. नाउ ड्राइव 1 का जो शो फंक्शन है वो ड्राइव 1 प्रिंट कर रहा है, ड्राइव 2 का जो शो फंक्शन है वो derv2 प्रिंट कर रहा है. सो दैट इज द बेस क्लास एंड 2 ड्राइव क्लासेस. नाउ लेट्स सी द मेन फंक्शन. सो मेन फंक्शन में हमारे पास जो पहली दो स्टेटमेंट है, दैट इज वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ड्राइव drv1 एंड drv2 क्लास, और उस ऑब्जेक्ट का नाम है dv1 एंड dv2. So memory is allocated for these two objects. So ये दो ऑब्जेक्ट बन गए हमारे पास. एक ऑब्जेक्ट है dv1, that is an object of derv1 class, and the other object is dv2, that is an object of derv2 class. ठीक है. Then we have a pointer. Now that is a pointer that can occupy 4 byte. The type of a pointer is base, right? So it can point to the object of its drive class. ठीक है, सिर्फ ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है ये पॉइंटर, ठीक है, और अपने अगर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है तो उसको भी पॉइंट कर सकता है. दैट इज एन ऑब्वियस, राइट. देन वी हैव अ स्टेटमेंट ptr is equal to and dv1. So dv1 का जो एड्रेस है, we are assigning that address, the address of dv1 object to pointer ptr. Now this connection will be established. Now this pointer points to dv1 object. Then we execute a statement ptr is equal to show, right? Now which show function will be called? So अभी हमने ये जो show function कॉल किया है ये उस टाइम पे किया है जब ptr पॉइंट कर रहा है dv1 ऑब्जेक्ट को. इसके बाद हम dv2 के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाएंगे, उस टाइम फिर show function कॉल करेंगे. Now when this show function will be called here we are accessing the normal member function via pointer, ठीक है. So show is a normal member function. So जब ये function execute होगा तो प्रोग्राम की आउटपुट आपके पास आएगी और बेस प्रिंट हो जाएगा. Then this means that it will execute this show function, right? And then why it execute this show function? Because we haven't make it virtual. हमने इस फंक्शन को virtual नहीं बनाया बेस क्लास में. अगर virtual बना लेते बेस क्लास में तो फिर ड्राइव क्लास का फंक्शन कॉल होता. And then the other statement is ptr is equal to and dv2. So dv2 जो एक ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस हम ptr में कॉपी कर रहे हैं. This means that we have this connection established, and then we are calling again the function show. फंक्शन शो को दोबारा कॉल कर रहे हैं ptr पॉइंटर के साथ. Now ptr पॉइंटर अब जो पॉइंट कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट को वहाँ पर, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? वो है dv2 ऑब्जेक्ट है, right? But when you call the show function, it will not execute the show function of derv2 class, but it will execute the show function of the base class. So again वो base आपके पास print हो जाएगा. Now why it is so? इस तरह से क्यों है? So there is an important rule that need to be understand at this point, that a compiler ignores the content of the pointer ptr and chooses the member function that matches the type of the pointer. So in case this function is not virtual, तब हमारे पास क्या होगा कि जब भी हम इस तरह से फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह से ptr एरो एंड शो फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया, अब वो किस शो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा? ptr अभी पॉइंट कर रहा है इस स्टेज पर, ptr पॉइंट कर रहा है dv1 ऑब्जेक्ट को, राइट? सो
क्या अब टाई किसके दरमियान है, क्या वो DERV1 क्लास के शो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज दिस शो फंक्शन, या वो फिर बेस क्लास के शो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. सो द रूल इज दैट इट विल लुक एट द टाइप ऑफ द पॉइंटर, नॉट द कंटेंट द पॉइंटर इज पॉइंटिंग. ठीक है, दो चीजें हैं, पॉइंटर की टाइप क्या है और पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी पे किस टाइप के कंटेंट पड़े हैं. So for this case where we are not declaring the show function as a virtual function in the base class, यहां पर इस केस में it will look at the type of the pointer. So type pointer की टाइप क्या है, base है. So base class के show function को कॉल करेगा और दोनों टाइम से यही हो रहा है. ठीक है, so इस टाइम पर भी यही हो रहा है कि वो जो फंक्शन है show function जो कि आप हर ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना चाह रहे थे, इस शो फंक्शन को आपने वर्चुअल नहीं बनाया बेस क्लास में. नाउ इन दिस केस ptr, in this case ptr is pointing to dv2 object, right? Now the tie is between dv2, derv2 का जो शो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा या बेस क्लास का शो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा. सो इन दोनों के दरमियान टाई है एंड दैट इज सॉल्व्ड बाय लुकिंग एट द टाइप ऑफ द पॉइंटर. पॉइंटर की टाइप क्या है, सो पॉइंटर की टाइप बेस है, सो बेस का शो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट? सो एक चीज होती है पॉइंटर की टाइप क्या है, एक पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन पे किस टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर है. सो हियर वी आर नॉट गेटिंग द polymorphic behavior. Why? Because we are just calling a normal member function via pointer. Right? So if we call a virtual function, a base class का जो virtual function है, अगर आप उसको call करेंगे via pointer, then we will achieve a polymorphic behavior. So let's go to the program. So this is the program. And in this program, so this is the base class, derv1 class, derv2 class, right? And we have a main function over here. So इधर हम पहले ऑब्जेक्ट बना रहे हैं dv1, dv2 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर ptr ऑब्जेक्ट है. नाउ अब यहाँ पर दो दफ़ा शो का फंक्शन कॉल होगा, एक दफ़ा और दो दफ़ा, और ये दो दफ़ा कोई वैल्यू प्रिंट करेगा, कोई चीज़ प्रिंट करेगा, और दोनों दफ़ा वो बेस प्रिंट करेगा, BASE. ठीक है, बिकॉज ये जो शो फंक्शन है इट इज़ नॉट अ वर्चुअल फंक्शन इन अ बेस क्लास. जो वर्चुअल फंक्शन नहीं है तो इट विल, जब पॉइंटर से आप उस फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो इट विल लुक एट द टाइप ऑफ द पॉइंटर कि पॉइंटर किस टाइप का है. सो जिस टाइप का है उस क्लास के शो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. सो लेट मी चेंज द फॉन्ट साइज. नाउ इट डिस्प्ले द मैसेज बेस. ठीक है, उसने दोनों दफ़ा बेस मैसेज डिस्प्ले किया यहाँ पर, बिकॉज इस टाइम पर भी जब पॉइंटर पॉइंट कर रहा था dv2 ऑब्जेक्ट को, dv1 ऑब्जेक्ट को, जब शो का फंक्शन कॉल किया तो derv1 क्लास का शो फंक्शन कॉल नहीं होगा, वो बेस क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा, बिकॉज पॉइंटर की टाइप जो वो बेस है. यहाँ पर ये देखा नहीं जाएगा कि पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो तो उस मेमोरी लोकेशन की जो टाइप है बेसिकली, या उस मेमोरी लोकेशन पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो तो derv1 क्लास का पड़ा है, तो derv1 क्लास का शो फंक्शन कॉल होना चाहिए था. नहीं, द रूल इज दैट if the intended function is not a virtual function in a base class, then it will look at the type of the pointer. If that function is a virtual in a base class, then it will look for the type of the content pointed by that pointer and execute that function that is according to the type of the content pointed by that pointer. So pointer जिस polymorphic behavior में क्या होगा कि वो जो pointer है जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन पे किस टाइप का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. अगर वो dv1 ऑब्जेक्ट है तो वो dv1 का शो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, अगर dv2 ऑब्जेक्ट है तो वो dv2 का शो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा. बट दिस इज अचीवेबल व्हेन वी मेक अ शो फंक्शन वर्चुअल इन अ बेस क्लास. अदरवाइज आपके सामने रिजल्ट है कि वो बेस क्लास की फंक्शन को कॉल कर रहा है और एक्चुअली उसे बेस क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं करना चाहिए. पॉलीमॉर्फिक जब इफेक्ट हम उसकी बात करते हैं तो उस केस में उसको बेस क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, उसको उसी ड्राइव क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहिए. सो शो का फंक्शन अगर एक ड्राइव क्लास के साथ कॉल हो रहा है, dv1 के साथ कॉल होगा तो dv1 का शो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा.
अगर dv2 के साथ कॉल हो रहा है तो dv2 का शो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो वो dv2 की कंटेंट शो करेगा, राइट। सो सेम फंक्शन कॉल हो रहा है बट वो एक्चुअली डिफरेंट फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे, बिहाइंड द सीन डिफरेंट फंक्शंस हैं, बट यहाँ पर सामने आपको लग रहा है कि आप सेम ही फंक्शन शो कॉल कर रहे हैं बट उसकी आउटपुट हर दफ़ा डिफरेंट आएगी आपके पास। When this will happen when you make the show function virtual in the base class. We will continue this thing in a next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.